सो अब तक हमने जावा पाइथन में बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं हमने ये भी देखा कि कैलकुलेशन करने के बाद इंस्टेंट आउटपुट हाउ कैन बी चेक। अनदर थिंग वी हैव सीन कि हम रिकॉर्ड भी स्टोर करके रख सकते हैं किसी यूजर का, किसी का या किसी का डेटा भी स्टोर करके रख सकते हैं हम पाइथन के अंदर। बट देर इज वन मेजर इशू वी हैव फाउंड। जब भी मैं प्रोग्राम रीरन करता हूँ, आई वोंट बी एबल टू ऐड, आई वोंट बी एबल टू सी द रिकॉर्ड्स अगेन। ठीक, लेट्स से मैंने 10 रिकॉर्ड्स ऐड किए डिक्शनरी, एंड दैट टू इन लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो वो 10 के 10 रिकॉर्ड तो रहेंगे वहां, बट मुझे 11th रिकॉर्ड अभी ऐड करना है और उसको बाद में देखना है। सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज दैट थिंग। ओके, सो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? There are two solutions available in the market right now. The first one is you can keep everything in file. Let's say I have data of 100 employees. I can keep it in file. For example, your Excel sheet. Okay. The another way, you can keep it in CSV format, comma separated value. जैसे आप टेक्स्ट फाइल में रखते हो वैसे ही आप 100 रिकॉर्ड्स रखो। बट वहां पर मेजर इशू ये आता है कि कुछ रिपीट हो गया तो एक्सेल में तो ऑब्वियसली वी कैन मैनेज, बट बहुत सारी चीजें मैनिपुलेशन के टाइम पे फेल हो जाती है, राइट? सो उस केस में हम कैसे मैनेज करेंगे डेटा को? तो देर इज अनदर वे वेर यू कैन स्टोर डेटा which is called as database, and nowadays it is called as RDBMS, database management system. Okay, जैसे मार्केट में बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है, आउट ऑफ विच वी आर गोइंग टू सी द बेस्ट डेटाबेस। मैं यहाँ पर अगर आपको स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे दिखाता हूँ, सो यू कैन सी हियर इन 2022 in databases section you can see the MySQL which is at the top. Okay, and we are going to see, and MariaDB, yeah, MariaDB is also a copy of MySQL only. Okay, so all the commands which you are going to learn in MySQL, the same commands will be run without any issue on MariaDB and other databases as well. So SQL language is common for everyone. तो MariaDB ही हम सीखने वाले हैं। We have our database created in cicloud.in, and हम कुछ बेसिक चीजें जो है, basically we will focus on DQL part. I'll give you assignment on the same, and then we are going to see remaining parts. So SQL and SQL. In SQL we are going to see first this DQL part. After that, maybe in the next session we are going to see DML part, and post that we are going to see DDL part as well. Okay, DDL part is like one time we need to use, but DQL on daily basis we are going to use these commands. So that is why we are going to focus on this one. Okay, so I'll share this link. There are two links we are going to follow for this session. The first one is SQL cheat sheet. I pasted in the chat box, and the second one is for this content. Okay, you can bookmark this in your system. Fine. तो सबसे पहले हम SQL cheat sheet का यूज करेंगे, and we are going to log into our server first. सभी लोग अपने
टर्मिनल से SSH कनेक्शन कर लीजिएगा इस अपने सर्वर पे। ओके, सो आई एम आल्सो गोइंग। हाँ मेरा So last class actually I was absent. What did we do? in the last session Yes. we have seen just dictionary. I think you have attended the dictionary part, right? What did we do in that? Okay, I'll take one example. Maybe you remember these things because we had covered this part in the earlier session as well. Okay, I'll just take one example. Okay, just to revise. If other guys are okay, shall I take the revision of dictionary? It is okay for everyone. Fine. Fine. So let me just connect to the cloud. And then a folder. ओके, Miraya and other candidates, please focus. Let's say मुझे कोई डेटा स्टोर करके रखना है. So I know I can store data in list. Okay, so list का syntax होता है, आप कोई भी एक वेरिएबल बना लो, equals to देकर you can keep you can enclose it with a square bracket, and inside that square bracket you can enter the data. Let's say Shailesh 23 and Mumbai. Fine. So my question to Miraya, can you please tell me how can I access this Mumbai? You have to say print 0,3. Record of Sorry. record of 2. Remember the index number? Okay, yeah. Yeah, list, from list we had used index number. Okay, so this is the same thing. Now if I try to run this, okay. Fine. Now it is very difficult, guys. It is very difficult to identify which value belongs to what. Okay, which value belongs to what. So whether Shailesh is a city or a name, it would be difficult for us. So to give custom index, to any record, what you can do, just a minute. अक्षय कचरा है का? कचरा है? नहीं है. So make it easy to identify which value belongs to what. We can make use of dictionary. Okay, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे name colon शैलेश age colon 23 city colon Mumbai. Okay, city colon, and then if I want to print age, in that case, Miraya, please guide me. How can I access age of record one? You have to go to 1. Record of 1. Record one of, I can simply say now age, because I have given custom key. Okay, custom index number, index name. Okay, here by default it takes from 0
1 and 2, right? Remember, for Yes. list, it takes 0, 1, and 2. But for dictionary, what we can say, the name has some value, age has some value, city index has some value. Okay, that is why we can easily identify. If I want to access age, I can simply say that variable of age. Let's try to run this. You can see it is showing me 23 for printing record of age. Please try it, guys, everyone. If it is Okay. repeating for you, then also please try the same. It is just for warming up. So I have a question. Yes. In this, it says record equals to Shailesh 23 and Mumbai, but with the place where you have given the dictionary, it's written rec 1. Will it still work? Yeah. See, these are two different variables, rec and rec1, right? You can give any name to variable. We have seen this variable names, right? Oh, okay. I thought you were accessing the same thing. No, no, no. We can override, but we have just used another variables, okay, with the different name.
So whatever I'm typing, it's not coming. Can you share your screen? Let me check. Okay, the editor has gone into replace mode. Press escape. Press I again. Now it's in insert mode. Now try to edit. Oh yes, it's working. Okay. So at the bottom left, you can see it was in replace mode. Okay. You can stop sharing.
So what do we do if we're done with this task? Are you done? Yes, sir, I was done. Fine. The next thing which we are going to see is how can we store multiple dictionary in one single list. Okay, that we are going to see. Let's say I want to keep a record of 3 employees. Okay, record of 3 employees. So I can use a list. Okay, I can use list, and for readability, I'm just keeping this square bracket in new line. Okay, readability, and inside this list, I can put one for any value. Okay, so in print, tell me, Miraya, how can I access 4? You'll have to do comma, M's and 1 in the square brackets. Exactly. Index number is 1. Okay. So it is showing me 4. Now, instead of 4, can I put some dictionary? Yes, that is possible. Let's say name, comma, salary. No change in the print statement. What it is showing me now? The entire dictionary. Okay, or record. Isn't it? Please try this.
Are you guys done Done, sir. printing the records? Okay. Now, please guide me. If this is printing this record, someone from the audience is available now. Yeah. Siley ma'am, can you please tell me how can I print salary of this Miraya? अगर सिर्फ सैलरी प्रिंट करना है तो प्रिंट में क्या लिखना पड़ेगा? employees one salary. Employee one of salary. Is it correct, Miraya? Yes, sir. Okay, let's try it. $25,000. Okay, that's simple. Okay. One more thing I just add here. Now let's add fine. Tell me, Miraya, how can I print your name? So, to print my name, you have to go to print, then you have to go EMPS, and then you have to do off 0 of 0, I think. Yes. And then after that, of name. Great. Fine. Siley ma'am, please guide me. How can I print salary of Siley? Print Okay. employee Okay. salary of Miraya or Siley, sir? Siley. One of salary. Great. So guys, you have got the concept. You have understood the concept. Now Miraya and 27K it should be. Okay, I forgot to give comma. Yes. Miraya and 27. Fine. And I can loop through this as well. Okay. For let's say E in EMPS, simply for E in EMPS. And if I just want to print name, if I just want to print name, I can simply say E of name. Okay. Just focus on this part, guys. Print E of name. So it is showing Miraya and Sahil. If I want to print name and salary as well, I can make use of this formatted string. So, I understand why did we use E? You can put any variable. Okay. Do you remember we had used for I in range? Yes. Do you remember in loops we have seen for I in range? So instead of I, we can use I, J, K, any variable name you can use. Okay. This is the temporary variable name, but this is the name of this list of dictionary variable. This is the name of list of dictionary variable. But why will we use the name of the list of dictionary variable? Why won't we use range? Okay, range, because we need to remember how many how many count is there. Okay, we have to keep track of how what is the length of my EMPS. Okay, so in that case, it would be difficult to manage that thing. That is why if you don't know the limit, if you don't know how many elements are there in list, we can simply put the list name. We can simply put the list name, and Python will take care of that thing, how many times it needs to like execute that loop. Okay, suppose right now we have two records in that list. We have two records. So this loop will execute twice. Okay, if we have, let's say, more than two records, so we don't need to keep track here. In range, we need to keep like 0, 2, 0, 5. So we don't need to worry about that thing. Getting it, Mira? Yes.
यस, अच्छा। तो कैसा है कि लिस्ट में हम लोग अगर रेंज रखते हैं तो हमें हमेशा काउंट का भी मतलब ट्रैक रखना पड़ेगा. बट इन दिस केस, if we have list, if you give directly list name, you don't need to keep the track. Okay? You don't need to keep the track. It will execute whatever number of elements we have in the list, it will execute that many times. Okay? Let's try it with the name. Okay, name it is showing properly. And space salary, if I want to print E of okay, and we also don't need to like use index number, right? If we directly use E, it will take each record. यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड है वो वन बाय वन ई में आते जाएगा, और ई में आएगा तो वो डायरेक्टली ई से ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. हमें वो इंडेक्स नंबर का भी ट्रैक रखने की जरूरत नहीं. ओके, तो ये थोड़ा सा इजी वे हो जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट रेंज. ओके, सो ये गाइस ट्राई कीजिए प्लीज. Okay, this program, try this one.
Okay, guys, have done this part. It says there's an error in line 10. I'm just trying to fix that. Okay. Can you please share your screen? Let Saili ma'am check the error. I think I know. I had put a space in one of them. I think I was not supposed to put a space. Okay, please try to remove the space. Still showing an error. I'll just present. Okay, please share screen. Show me the code. जो कर्ली ब्रेसेस है ना सर, Okay. फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का जो कर्ली ब्रेसेस है वो उसके बाद जो आता है ना डबल कोड उसने नहीं दिया है शायद Okay, that is इसलिए one वो। of the thing. हाँ, But another one is another 1, one is 2. That is not need required, right? यस 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 यस। Okay. हाँ, तो वो वो remove कर नंबरिंग दो नहीं करना मेरा है। 1 comma and 2 comma you don't need to put. You just need to put dictionary over there. One or two also remove. Remove 1 and 2 as well. Okay. Miraya, please remove 2. Yeah, don't use mouse. It is not like recommended. While using Linux, you just need to use keyboard. Okay. And after that, after one record, you need to put comma symbol. Okay. After one record, you need to put comma. Okay. Because it should be separated by comma. The list should be separated by comma. हाँ साइली मैम बताइए। जो फर्स्ट डिक्शनरी है मिराया 75,000 के बाद हाँ, उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस होता है उसके बाद आपको कॉमा देना है ताकि वो डिक्शनरी या एंड हो जाए और दूसरी एंड हो डिक्शनरी जाए वी और कैन ऐड दूसरा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के बाद। कर्ली ब्रेसेस के बाहर। Yes. And Miraya, can you see in print statement, in the last line in print statement, you have put F and you have started with double quote. How many double quotes should be there? It should be even, right? It should be even. Double quote should be even. So double quotes you have started and you need to end with double quote as well. Yes, there. Put double quote. Not there. Not after curly braces. After curly brace, yes. Yes. Now try to run it one more time. Okay. Now again go to program. Okay. Miraya and Saili, both of you, just keep this in mind. In the last line, can you see? F के बाद हमने double quote start किया. Okay. And double quote end में होना चाहिए.
इन बिटवीन अगर कहीं पर भी डबल कोट आता है, सो प्रोग्राम क्या कंसिडर करता है कि इसका डबल कोट यहीं तक ही है, राइट। देखो ई ऑफ हमने नेम लिखा, ई ऑफ सैलरी लिखा, उसके अंदर भी डबल कोट आ रहा है। सो आउटर, अगर आउटर साइड में हमने डबल कोट यूज किया तो इनर साइड में हम सिंगल कोट यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए गाइस इंडेक्स नेम के लिए? सिंगल कोट। सिंगल कोट। यस, ओके। ई ऑफ सैलरी के लिए भी सेम करना है। emp, okay, let's check that variable is available or not. emp, press fg. Yes, I think. EMPL दिया है उसने। empl, okay। और जो प्रिंट किया है ना आपने ऊपर, उसमें भी हाँ, EMPL सब चाहिए जगह ना। emp रख दो फिर। हाँ, empl की उसके जगह नीचे emp वाला, कर उसके नीचे वाला। दो। नहीं, Put on ये करेक्ट है, second, यही है। हाँ यस, ये नीचे वाला, यस। ओके, फाइन। इस प्रोग्राम को फिर से एक बार ट्राई करना मेरा है आफ्टर द सेशन, ओके। Okay. ओके, सो प्लीज अनशेयर योर स्क्रीन। सो गाइस, हम लोगों ने देखा कि डिक्शनरी में रिकॉर्ड कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, एंड एक से ज्यादा रिकॉर्ड कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये सारी चीजें हम फाइल में तो स्टोर करके देख ही रहे हैं, बट हाउ कैन वी कीप दैट थिंग इन लाइक अ डेटाबेस, एंड हाउ कैन वी एक्सेस दैट डेटाबेस। ओके, तो डेटाबेस के अंदर का हमने सिर्फ एसक्यूएल पार्ट आज पढ़ना है। बाद में हम रिपीट करेंगे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ओके, डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, एंड देन सेम चीज हम डेटाबेस से जो डेटा लेकर आएंगे उसको लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में कन्वर्ट करके उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट 3-4 सेशन में यू विल बी कंफर्टेबल टू यूज पाइथन का लिस्ट, पाइथन का डिक्शनरी, पाइथन का लिस्ट ऑफ डिक्शनरी प्लस डेटा कमिंग फ्रॉम डेटाबेस। ओके, सो 3 to 4 सेशंस गाइस, नेक्स्ट 3 to 4 सेशंस में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे ये चीज यूज करने के। फाइन, नाउ आई जस्ट राइट क्विट दिस, आई डोंट हैव एनी फाइल ओपन। आप लोग भी राइट क्विट कर लीजिए गाइस, एंड गिव मी कंफर्मेशन बाय अनम्यूटिंग। राइट क्विट करके बाहर आ जाइए। Done, sir. साइले मैम, प्लीज कंफर्म। Yes, sir, done. Okay, fine. Now guys, you can simply say MySQL -u, okay, MySQL space -u dit user -p dit user -p and enter. Everyone should get this prompt message for password.
So what is the password? Yes, it's same shift 5 guys. The password is same shift 5. Have you logged in guys? Yes, sir. Yes, sir. ओके क्या हुआ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले तो अपना खुद का कंप्यूटर स्टार्ट किया था। कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद इंटरनेट कनेक्शन हमारे सिस्टम पे था, सो वी वर एबल टू लॉग इन टू ciacloud.in बाय यूजिंग SSH कनेक्शन। ओके गाइस, हम लोगों ने SSH कनेक्शन किया और हम लोगों ने ciacloud.in पे लॉग इन किया। ciacloud.in पे लॉग इन करने के बाद वहां पर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है MySQL। ओके, MySQL और MySQL ही क्या सिंपली से उस MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर अभी हमें लॉगिन करना था, इसलिए हमने ये कमांड रन की। ओके, MySQL -u dit user -p। ठीक, आप ये नोट डाउन करके रख लो गाइस, ये वाली कमांड। आप लोगों को जब भी MySQL पे लॉगिन करना है तो आप ये कमांड टाइप करोगे, बट मेक श्योर कि आप पहले ciacloud.in के अंदर हो। मतलब इस तरह से आपका यूजर नेम @ciacloud पहले दिखना चाहिए, तभी आप इस पे लॉग इन कर सकते हो। ओके, एंड नाउ MySQL -u dit user -p एंटर करने के बाद what we are going to do, we are going to run commands in this MySQL shell। ओके, इसको कहते हैं MySQL shell। आपको स्टार्टिंग में लिख के आएगा MySQL, इसका मतलब है कि आप MySQL में लॉग इन हो गए एंड MySQL shell में अब हम क्या कर सकते हैं, कोड अपने कमांड्स रन कर सकते हैं। ओके गाइस, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, तो ठीक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ MySQL में लॉगिन करने के बाद शो, सॉरी कैपिटल्स में लिखना पड़ता है, शो डेटा बेसिस, शो डेटा बेसिस। तो शो डेटा बेसिस करने के बाद आपको उसने डेटा बेसिस की लिस्ट शो करनी चाहिए गाइस। ये वाली कमांड रन करके देखिए, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। शो डेटाबेसेस एंड सेमीकोलन देना जरूरी है गाइस। ओके, Done, थोड़ा सा sir. यूज टू होने के लिए टाइम लग सकता है। दिस इज द एक्चुअली लास्ट सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू सी, पाइथन एंड MySQL। इसमें ये लास्ट सॉफ्टवेयर है जो हम लोग देखने वाले। तो शो डेटाबेसेस कीजिए गाइस। ओके, So it just says it's like a C and a angular bracket on top, and it tells me to go back to my SQL. okay, let's see. Can you please share your screen? Let Siley ma'am see the error. Yeah, Siley ma'am, can you please guide her? Show databases. Yeah, first of all, press Ctrl Oh. L for clearing the screen. Okay, now again type the command show Show space, databases. yeah, show space databases, space databases, Databases. semicolon. Semicolon. Can you see the list of databases? Yes, now I Okay, can. okay, just keep the screen like shared.
Please share the screen again. Okay. Saili ma'am, can you please guide her how she can get into ecom database? Okay. Don't Okay. use mouse. Okay. हाँ. How can she get into ecom database? Use ecom semicolon. Use space Use in ecom. capital and ecom in small letter. Okay. And ecom in small case. Small Ecom, letter. semicolon. Semicolon. And enter. What it is saying? It is saying database changed. Change. Okay. So So first we command will- was show databases. Second command was to get into database. We are using use ecom. Okay. Now the third command. Can you please guide her? How can she third see command all is the tables? okay. Third command is show tables all in capital letter. Show tables. Space show के बाद space दो. Okay. Okay. And Tables semicolon. then Enter. okay. So now we have reached two tables. Okay. तो बड़ा सेट कौन सा है गाइस? बड़ा सेट था ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है MySQL सॉफ्टवेयर. ओके. मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे हमने लॉगिन किया वो. इतना क्लियर है? हमने SSH करके लॉगिन किया है. Yes sir. फाइन. देन उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा है जिसका नाम है MySQL. MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस है जिसकी लिस्ट हमें दिख रही है. अल्फा, ब्रावो, चार्ली, DIT, ecom, फूड, gamma. What are these? These are all databases. Okay. ये डेटाबेसेस अलग अलग डेटाबेसेस एक सॉफ्टवेयर के अंदर हमने रखे. उसमें से ecom इज वन ऑफ द डेटाबेस. ओके. और ecom के अंदर जाने के लिए हमने क्या किया? एक कमांड रन की यूज स्पेस ecom. क्या हम यूज स्पेस अल्फा कर सकते थे? यस. क्या हम यूज स्पेस लाइब्रेरी कर सकते थे? यस. क्या हम यूज स्पेस मूवीज कर सकते थे? यस. ओके गाइस. वैसे हमने यूज स्पेस ecom किया क्योंकि वो एक डेटाबेस है. अब उस डेटाबेस के अंदर जाने के बाद ऑब्वियसली डेटाबेस के अंदर होते हैं मल्टीपल टेबल्स एंड वो टेबल्स की लिस्ट मुझे शो करनी थी. इसलिए मैंने कौन सी कमांड रन की? मेरा बताओ. टेबल्स की लिस्ट शो करने के लिए Show tables. show tables. Okay. Show tables to see the list of tables. Okay. And then हमें क्या करना है? अब एम्प्लॉइज के अंदर क्या रिकॉर्ड्स है वो हमें चेक करना है. जैसे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हमने थोड़ी देर पहले देखा था वैसे ही रिकॉर्ड्स इस एम्प्लॉइज के अंदर स्टोर है. एंड मे बी नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम लोग यही डेटा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के फॉर्मेट में पाइथन में लेकर आएंगे. ओके. तो साइली मैम प्लीज गाइड हर. हाउ कैन शी सी all the records available in employees table? Okay. Employees table. First select in capital Type letter select space star asterisk no, star वो वाला नहीं asterisk जो symbol. asterisk जो हम Star इसके symbol होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए जो यूज करते हैं ना वो हाँ. asterisk. हाँ, Yes. space Space from in capital letters from FROM. After space that space employees in and small letter. employees in small letters. Semicolon. Enter. Enter. Miraya, can you see the records? Yes, sir. But whose This, records are this? sorry, Which record is this? Is this from our computer? this is for from server Data CI Cloud. server. You have logged into CI Cloud, right? Yes.
So we have inserted this record. Okay. Okay. I have inserted this record because we are going to just learn the DQL part, the select wala part only. That's why we are going to see this. Okay. So हाँ फर्स्ट कमांड जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हम बहुत बार ये कमांड रन करने वाले हैं, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लाइक बाय हार्ट दिस थिंग एंड वी डोंट नीड टू लाइक रिमेंबर एवरीथिंग. ये प्रैक्टिस के साथ ये याद हो जाएगी कमांड्स. ओके. सो सेकंड वन, Saili ma'am, can you please tell her, guide her, how can she only show name, address, and salary? How can Name, she address, only and show salary. name, address, and salary? In Okay. database world, we call it as how can we only project name, address, and salary column. Okay, sir. First, select on capital letters. Select space name, small letter showing table this format. Okay. Name, comma, salary, and address, comma, address. From, क्योंकि हमें एम्प्लॉयज का डेटा में से चाहिए, सो फ्रॉम के बाद हम एम्प्लॉयज डालेंगे. Yes. The data, the columns data should come from employees. सेमीकोलन, यू आर मिसिंग Up arrow? सेमीकोलन. Up arrow? यस. Okay. एक बार और Down करो, arrow? अप एरो. Down arrow, down arrow. Actually, that command has अच्छा, been sorry. cancelled. Hmm. So, type again. Type again. Yes, type again. Okay. Now, the next thing is you need to explain her what is the difference between star and this column name. Okay, let me try. Mirai, have you understood the logic of star and column names? If you put star, it will show all the All columns. data Okay, all the in columns column. it will show. Okay, and if you want to specify some limited columns, we can put instead of star, we can simply put the column names. Can you see the column name, salary, address? Yes. Okay. Now you need to tell her how can she only print data like record of all employees who are from Mumbai. Okay. Select name, not capital. Name, comma, सर सैलरी पुट करना है उसमें या सिर्फ एड्रेस? Name, salary, and address. हाँ ठीक है, कॉमा, सैलरी
salary comma address space from employees क्योंकि हमें अभी मुंबई के ही चाहिए तो हम यूज करेंगे वेयर इन कैपिटल लेटर स्पेस वेयर स्पेस एड्रेस जिनका एड्रेस इज इक्वल टू डबल मुंबई इन डबल ब्रैकेट क्या बोलते हैं उसको Double quote. डबल कोड सॉरी मुंबई Then last में semicolon. सेमीकोलन एंटर सी one record show Can you show me all the records? Now, question for you, Mira. Can you show me all the records who are from Nashik? Okay. Where is a MySQL keyword? So it should be in caps. And this name, salary, table name, these are our custom column and table name. So it should be in small case. Okay. The column names and table name we have given. So that is why we keep it in small case. Great. Now, my next question is, how can we print all the records, all the employees records who are from Mumbai or Nashik? Who are from Mumbai or Nashik? Saili ma'am, can you please guide her? yes sir select No, this one is fine. Then after that, वेयर के बाद जो एड्रेस लिखा है आपने वो करेक्ट है. ओके Till this it is इज correct. इक्वल टू निकाल लो उसके बाद इन कैपिटल इन इन Capital इन इन ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट inside round डबल bracket. कोड में आपको सर आपने नाप क्या बोला मुंबई और नासिक ना Mumbai और Nashik. ओके मुंबई कॉमा डबल कोड में नासिक ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन ठीक है एंटर करो Okay, great. Mira, getting it? Yes, sir. And another way is also there. I have asked you to show record from Mumbai or Nashik. So up arrow karo. Up arrow. Okay. And before semicolon, space or in capitals, space, address equals to Mumbai. Space, address equals to Mumbai. See?
और एंटर। दोनों ने रिकॉर्ड सेम दिखा है, बट दोनों का लिखने का तरीका अलग है। सी इन और यू कैन सी द क्वेरी इज गेटिंग लाइक बिगर। ओके, वो कोड स्टेटमेंट जो है या फिर जो कमांड है वो बहुत बड़ी बन रही है। बट हमें अगर एक ही कॉलम के ऊपर ऐसे कुछ अप्लाई करना है तो हम इन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। साइली मैम गेटिंग इट? यस सर। मेरा यह क्लियर है? Yes. चलो, अभी मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड दिखाओ फिर से। सिलेक्ट नेम सैलरी एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉइज, सभी रिकॉर्ड दिखाओ। Semicolon. Just put the semicolon and then enter. No, down arrow. Fine. Up arrow. Yeah, down arrow. Yeah, semicolon and enter. Okay, it is showing all the records. Miraya, can you please show me all the employees who has salary greater than 50,000? All employees who have salary greater than 50,000. So greater to or equal than only greater than or equal to and greater than. Yeah, greater than or equals to 50,000. Right? It should be greater than, right? Salary greater than, then equals. You have put salary less than. You need to put salary greater than. Up arrow. Then instead of less than, greater. Put greater than. Yeah. Now enter. Getting it? Yes. Now I want all the records who has greater than 50,000 salary, but only from Mumbai and Nagpur. Okay. Only from Mumbai and Nagpur. It should skip the USA record, Nasik record. Up arrow, good, space, great, and no, it should have and, no? And remove that in. In is an operator, like equals to, greater than. In is an operator. So and
Where is already we have given. Okay, so we need to just put column name. What? Address. Address is our column. Address space. Now you can put the in operator. From Nagpur and Mumbai. Clear है मेरा है? Yes, sir. Okay. Now press Control D. D for Delhi. Control D. Control D again. And exit. EXIT. Okay. Now you need to share your screen again. Share your screen again. Okay. You need to log into the system. You need to log into MySQL and you need to show all the records. Okay. From employees table. Okay. If you get stuck, Saili ma'am is here to guide you in between. Okay. Only name, address, or salary, or all of them? Every single. All the records. Okay. I just want to check whether you remember the process to log into MySQL or not. Whether you have understood the login system or not. Just that need to check. सेमीकोलन हाँ आ गया. Up arrow, press up arrow and then remove that. Yeah. Show start Show what? start Employees is already किया there. So select command now. Okay, sorry. Select वाला है. Select. Use a command. Start from employees. Just a second, Miraya. Yeah. Just a second. Wait. रुको मीराया. हाँ. Backspace दबाओ. पूरा backspace.
और पूरा समटाइम्स यू माइट लाइक कभी कभी हम एंटर प्रेस कर देते हैं ऐसे कमांड टाइप करते टाइम, और ऐसे न्यू लाइन में अगर ये एरो आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें फिर से कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर वाली ही कमांड कंटिन्यूएशन में आती है. यू कैन सिंपली पुट सेमीकोलन and enter, so it will also run. Getting it? Yes, sir. Okay, sometimes ये होता है कि हम एंटर प्रेस कर देते हैं गलती से एंड फिर से कमांड टाइप करते हैं, तो फिर से कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली ही कमांड कंटिन्यूएशन में रहती है गाइस. ओके Okay, sir. चलो अभी Okay. आप मुझे साइली मैम जस्ट लिमिट एंड असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का एक कमांड बता दीजिए इसको, एंड देन वी कैन रैप अप द सेशन. एक Okay, sir. लिमिट मतलब 10 रिकॉर्ड कैसे शो कर हाँ. सकते हैं, एंड देन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सैलरी के हिसाब से वो दिखा दीजिए. ठीक है. For limit, select star from employees space limit in capital letters. 10 or 5. Yeah. 5 limit. 10. 10. Okay, 10 semicolon. Okay. If I want to print next 10 records, then limit 0. 10 comma 10. For ascending order, select star. Sorry, select स्टार मत लिखना, सॉरी स्टार नहीं है. ओके, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय इन कैपिटल लेटर, ऑर्डर स्पेस बाय डी, सॉरी सैलरी DESE for descending order, semicolon in capital letter. क्या आया, order from select salary from employees order by this line. 1 मिनट, मैं करके देखती हूँ उसको. DESC. ओके, अच्छा, अप एरो DES करो और ई निकाल के चेन्नई का सी डालो SC. डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए. सेम Okay. कमांड फॉर असेंडिंग ऑर्डर बट पुट ASC. डिसेंडिंग की जगह AS, सॉरी AE, क्या है इसमें. करो अप एरो करो एंड वो DESC निकाल दो, सो इट विल शो इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, एंड ऑप्शनल है, ठीक है, एंड दिस इज ऑप्शनल. अप एरो करो, अप एरो, सैलरी के बाद आप ASC भी लिख सकते हो, ASC कैपिटल में. कैपिटल में. Yeah. This is optional, but for ascending it is optional. For descending it is mandatory. Mira, getting it? Yes. Can you show the name as well with the salary? Can you show the name as well? किसकी सैलरी कितनी है वो पता चलेगा ना. हाईएस्ट सैलरी किसकी है वो पता चल जाएगा. नेम कॉमा. किसकी सैलरी सबसे ज्यादा है? मेरा James.
जेम्स की। एंड सबसे लोएस्ट सैलरी किसकी है? Ritika. ऋतिक। सो गेटिंग इट। सो हम लोग इस पे थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे एंड देन यूज टू हो जाएंगे। फिर हम सेम डेटा, ये जो डेटा है इसको हम पाइथन में लेकर आएंगे एंड देन वहां प्रोसेसिंग करेंगे। ओके मेरा? Okay. फाइन। Okay. सो नेक्स्ट वीक और थोड़े कमांड सीखेंगे। विवान का भी जब रिवाइज होगा, विवान कुछ सिखाएंगे तो तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा। ओके एंड विवान, इफ विवान गेट स्टक इन बिटवीन यू कैन आल्सो गाइड हिम। ओके Okay. फाइन। सो कैन वी रैप अप हियर एंड विल मीट नेक्स्ट वीक? Yes, sir. Okay, sir. फाइन चलो, मैं रिकॉर्डिंग इसका जैसे प्रोसेस हो जाता है आई विल शेयर यू द लिंक। ओके चलो, मिराया एंड साइली मैम, थैंक यू वेरी मच। Welcome, sir. या बाय। Thank you, sir. या बाय, टेक केयर।